E-Literate is the India's largest destination loved by thousands of aspirants across the country. Through our website www.eliterate.in, we are helping many students who are preparing actively for different competitive examination and polish them to enhance their performance by taking quality tests, different quizzes, and many more activities which ultimately sharpen their nerd brains. Till now, E-Literate has provided many useful information to the students across the globe through various technical, social, and fun events that enhance the performance of the student. We conducted different quizzes mania at a national level, and now we are also having our app in which we are providing test series for more than 1300 exams with 4700 plus mock tests. We understand you don't have time to go through lengthy news articles every day while studying. That's why we deliver you all the news you need in a minute short reads and current affairs on the daily basis. We believe that education is the primary need and right of every individual, and we thrive to deliver the best to make young minds ready for the future. To achieve our goal, we have made collaboration with Intella, providing training in a wide range of courses to the young minds and provide corporate certificates. Courses and certificates that we offer are as follows: Python Bootcamp, Machine Learning, AI, Internet of Things, etc. Like this, we are providing 10 plus courses in technical field to groom you. We are certificate partners with renowned companies like Microsoft, Autodesk, Adobe, HP, etc. We have delivered IT training, campus recruitment training, corporate training, and faculty development programs to various colleges and universities. Few of them are IIT Delhi, IIT Kanpur, NIT Kurukshetra, Graphic Era University Dehradun, Lovely Professional University Jalandhar, Bharat Institute of Technology Meerut, and many more. We are having 25 plus experienced corporate trainers, 2 lakh plus professional faculties and student trained, 4.9 Google rating, 25 plus regions reached, 250 plus project done and delivered. And yes, we are not stopping here in upcoming days. We will introduce different new schemes regarding educational well-being. Now, let's see the conversation between our two fellow mates who will be going to clear all your queries. हाय हर्षित। हे ईशा, व्हाट्स अप? कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट तुम तो बड़े बिजी चल रहे हो आजकल। कोई कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं कर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मैं थोड़ा सा वर्कशॉप्स पे बिजी था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। हाँ, ओजस बता रहा था कि आजकल तुम वर्कशॉप्स वगैरह कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आजकल मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दे रहा हूँ और नए नए कोर्सेज ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा क्या है भाई, हमें भी बताओ। कौन सी साइट से तुम अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप कर रहे हो? ईशा, तुम ना दिन भर इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करना और फिर 4 साल बाद बैठे रहना प्लेसमेंट के सहारे और अपना टाइम वेस्ट करना। मैंने तो अपना पाइथन सीखने के बाद वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था और करंटली मैं जावा सीख रहा हूँ और साथ ही साथ मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहा हूँ। इसके बाद तो मेरा क्लियर है, मैं एक कंपनी स्टार्ट करूँगा जो कि ऑलमोस्ट डन है। वाओ यार, तुमने अभी तक अपना बीटेक कंप्लीट किया तो तुम अपनी खुद की कंपनी खोल रहे हो। दैट्स ग्रेट। प्लीज यार मुझे भी गाइड करो ना। या श्योर, व्हाई नॉट। कुछ दिन पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह से भटकता रहता था, कंफ्यूज था कि लाइक अब क्या करें लाइफ में, आगे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, इतना पेंडेमिक है और ये सब चीज़ें हैं। प्लस मैं अपने दोस्तों को भी देखता था कि यार वो लोग नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे एक ग्रुप है
एजुकेशनल ग्रुप है द टीम इलिटरेट, ये मेरे लिए मसीहा बन के सामने आई और वहाँ से मैंने पाइथन सीखा। और तुम तो जानते हो कि मेरी कोडिंग कैसी है, लेकिन वहाँ से पाइथन सीखने के बाद मेरी कोडिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं खड़े खड़े किसी को भी पढ़ा सकता हूँ। यार और बताओ इसके बारे में। और तुमने अभी इलिटरेट कंपनी के बारे में कुछ बोला? हाँ, मैंने इलिटरेट कंपनी का नाम लिया और मेरी भी कल ही सर से बात हुई और ये कंपनी फिर से एक नया बैच शुरू करने जा रही है पाइथन का, जो कि 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। तुम कहो तो मैं उनसे बात करके तुम्हारा भी इनरोलमेंट करवा सकता हूँ। यार मुझे करना तो है, बट मेरे मन में कुछ डाउट्स हैं। लाइक यूट्यूब पर काफ़ी सारी साइट्स हैं या वीडियोस हैं जहाँ पर हम एक्सप्लोर करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि और ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। देन यही साइट क्यों कि इसी से ही करें? एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी साइट्स पे, यहाँ तक यूट्यूब पे भी फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं पाइथन को लेके। बट बात आती है प्रीमियमनेस की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अमन दत्तरवाल को ही देख लें, वो पहले फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराता था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसने चीज़ों को पेड कर दिया, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि उसने अचानक से फीस बढ़ा दी या चीज़ों के नंबर बढ़ा दिया, उसने चीज़ों को पेड कर दिया क्योंकि वो अपना रिजल्ट और अपना आउटकम बढ़ाना चाहते थे। तो अगर आपको सीखना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इस चीज़ में इनरोल करना चाहिए। ये बात तो ठीक है तेरी, बट पे करना ही है तो मैं पे में इसी इलिटरेट को पे क्यों करूँ? और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज आते हैं जिनको मैं पे कर सकती हूँ, तो उन पेड कोर्सेज में तो और भी अच्छे से ले सकती हूँ, तो इलिटरेट ही क्यों? हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हें बहुत सारी साइट्स पे पाइथन के पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टीज मिल रहे हैं जो कि आईआईटीज और एनआईटीज के फैकल्टीज हैं, जिनके पास 10 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस और इनके पास 15,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। और मज़े की बात तो ये है कि 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहले से ही इस चीज़ में एनरोल कर चुके हैं। और मुझे इस कोर्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिल जाता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इस अफोर्डेबल प्राइस में कोई और कोर्स ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। चल ये बात भी ठीक है, बट इस प्रोग्राम का फ्यूचर में प्रॉफिट क्या है? क्या यूज़ आएगा ये? देखो यार, इस कोर्स का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि इस चीज़ का आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि आपने पाइथन किया है। और साथ ही साथ इन लोग का यार, मैंने देखा है यार, इन लोग का कोलैबोरेशन बहुत बड़े बड़े कंपनियों से, लाइक HP, IBM, एडोबी है और माइक्रोसॉफ्ट है। तो आपको साथ ही साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट मिलता है, एक प्रोफेशनल टीम मिलती है जिसके साथ आप लाइफ टाइम कनेक्ट रह सकते हो। और पता है, लोग इस प्रोफेशनल एरा के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। वाओ यार, इट्स रियली नाइस। बट इस प्रोग्राम की कॉस्ट क्या है? मतलब पूरा हम जो पूरा लेंगे, पूरा जावा का, उसका जावा पाइथन का, उसका पूरा कॉस्ट क्या है? पूरा पैक कितने का है? यार, जब मेरी इस कोर्स के रिगार्डिंग सर से बात हुई थी तो सर ने मुझे बताया था कि इस कोर्स की फीस है 2200, बट अगर तुम इसे 2 अगस्त 8 PM से पहले अप्लाई कर रही हो तो ये कोर्स तुम्हें पड़ेगा 1450 रुपीज़ का। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट डील। अच्छा यार, एक बात और बता, इसकी फैकल्टीज़ कैसी हैं? इसकी फैकल्टी के बारे में तो बता। यस, हमारे साथ होंगे दिलीप कुमार सर, हु इज फैकल्टी एट ICT Academy, IIT कानपुर। He is a Microsoft certified trainer and Oracle web developer and trainer. He trained up to 20,000 plus students across Pan India and trained 2,000 plus faculties during FDPS. वाओ यार, इतनी अच्छी फैकल्टी, इतना अच्छा प्रोग्राम, कौन मिस करना चाहेगा? मैं अभी एनरोल कर रही हूँ और ऑफर और मिल रहा है। आई एम नॉट गोना मिस। Hello everyone, I am Shubhayan Das. I am a BTech graduate in Electronics and Telecommunication. I did my summer internship training from Intel Education in machine learning. They taught all the concepts from the scratch, and now I am confident enough to take any project in machine learning. The faculty here are highly experienced and they have a strong and thorough knowledge about the subject matter, and they teach very well, clear all your doubts and make you confident enough to learn everything from the scratch to advanced level. I strongly recommend this course to anyone who has an interest in machine learning or any other technical or the new technologies that are newly coming in the market. Thank you. Hi there, this is Gautam. I have done my summer internship in Intel Education back in 2020. It was pretty good experience for me because at that time I have came to know about the industry requirement for a machine learning engineer. What are the technologies we will use and how the things keep on working in the
technology in the field of machine learning. Okay, actually this internship is an eye-opening for me because I never were exposed to a industry like municipality corporations and all these things. Actually, I made a project for the Gwalior Municipality Corporation. So before that I have no experience how to do a project for the commercial purpose. Thank you, Intella, for giving me such a great platform for building my career in the field of machine learning. Thanks a lot. So back when I was in third year, I did a training in IoT under Jay sir, who is in Intella education, and he was really a great teacher, and he used to clear all the doubts going forward in the topic. He used to bring these chips and sensors in the class, and he made us do the things practically, the things that he taught us going along the topic. So that made the learning experience really great, and he was a really friendly teacher, and he was his teaching was the best that I had seen in my whole life. Means not only in college days but also in this compared to the school days. And I really enjoyed the whole training experience, and I would recommend this training to everyone else. Means it will be a great experience. Jay sir from Intella Education. And my takeaway from the training was that I started to believe in myself more than ever, because I could practically do something that I really loved using before. Like I really loved to use smart devices and smart technology and all that, and I could practically do that now. Means I could connect devices to Google Assistant and Alexa and all that, and thanks to Jay sir, that he made it all possible. So yeah, I would give a positive recommendation to this training, and that's it for me. Thank you. Yes, मैं तो कहता हूँ ये कोर्स सभी को करना चाहिए. So what you all are waiting for? Don't miss this opportunity. Check out the description box for further details. Please like, share and subscribe. Thanks for watching.